we are talking. So we are talking about an interesting chapter that we'll do today. So you don't need books, you can close right now. Abhi book पढ़ने की जरूरत नहीं है. So Shitej Mittal, Chinmay Ranade, Ishan, Abhyuday, and Mohana Varshin, and Saradas is there. So that's a big absenteeism number. Okay. One bड़ा absenteeism है, right? पुष्पलता तुम देख लेना ये एडमिट करने का प्लीज. Hello, Nilanjan. Good morning. Good morning, sir. Okay, guys. So, like I was saying, the topic that we have today, this is a very interesting topic because this is like a new found practice by SAP people, where they go by asking a lot of problems. Where they go, take minute ago, huh? Let me get used to switching all of this. So I should go to this, I should do this. Content from second camera. Right. So अभी आप मुझे देखें इसलिए मैं ये ऐसा कर रहा हूँ. So we are talking about chapter 8. Chapter 8, which you don't have to refer right now. Do not open your books. So this is, something that you will see in SAP of late, where they have this practice of asking questions in graphical formats. So they will give you data in form of bar charts, line charts, not so much pie charts, two-way table, there could be a table and then there will be some data. Then there's something called a scatter plot, uske questions milenge. So good. So that means if you see, this is something that they've started off late, and you'll see many problems. Rather, if I have to classify a particular type of problems, अगर हम देखें जो ज़्यादा आते हैं किसी particular format में, this is the graphical format, where questions even from linear equations, जो आपने पहले पढ़ा है, linear algebra, linear relationships, वो वाले type के questions, word problems, probability based questions, survey based questions, survey जो किसी society पे हुआ, politics में हुआ, business survey. So they'll put that data, they'll do some survey, they'll put that data in graph, and then they will want you to solve it. So guys, basically, if you see, what we are going to discuss today is more of data interpretation, which means first reading the data, analyzing, understanding the data, and maybe then doing some calculation, which may not be always the case, but maybe you're doing some calculation, but you're always doing some or the other interpretation. So data interpretation का सबसे important point क्या है? That after you see the question, the first thing is you should not see the problem, rather you should read the given data and understand. उसमें समझ आता है, but let that go. If you understand the given data, and if you are lucky, you may have 2-3 problems to be solved on the given data. जैसा कि, just for example, आपने paired passages करना चालू कर दिया EBR में, evidence based reading में paired passage पढ़ा है. Paired passage क्या होता है? For a given set, EBR हुआ इस क्लास में जैसे हाँ हुआ है, but people from C4 कोई नहीं है अभी ना, C4 से कोई नहीं, ईशान को C3. So
पेयर्ड पैसेज में if you have seen तो एक पैसेज आता है और एक डेटा साइंटिफिक कुछ ऑब्जर्वेशन का पैसेज आता है जिसमें ग्राफ होता है and then there is a question which is based on that graph. So this is something like that when we say graphical representation. Of course ये अलग से यहाँ पे classified नहीं होगा, mixed होगा, section 3 में भी problem आएंगे, section 4 में भी problem आएंगे. Single-handedly this type of problems would outweigh any other type of problem, which means that graphical based problems you'll find lengthy. So it is important that we understand what we are doing here. So सबसे पहले few things before we attack the problem, because there is no theory as such. I don't have a theory to share with you and tell you that this is the formula, these are the steps, and this would be the definite outcome. There's nothing like that. But there are a few things that I want to tell you when it comes to graphical based questions and the questions that we're going to do today. So we are going to do 2-3 things today. We'll first talk about, my agenda today would be, when you take classes less physically, so it takes time. So we will talk about few things today. We'll talk about data interpretation, which is called DI. Then we'll talk something about data handling. And data handling is one word that you will find in official SAP guide. ये सबको data handling बोलते हैं. So we will talk about these two. Then we will talk about, if time permits, we'll also talk about standard deviation. If time permits, we will talk about standard deviation. ये तीन चार चीज आज हम करेंगे. We'll talk about data interpretation. How do you interpret the data? What does this mean? Drawing conclusions, references, answering the question. We'll talk about data interpretation again. Data handling, data interpretation का सब कुछ plus doing some steps getting to an answer. Percentage change, rate of change, growth, decline, whatever. And then, if time permits, we'll go little into statistics part, and we will look at what is standard deviation, what is range. Okay, हम ये कुछ चीजें करेंगे. And when I come to chapter 9, then we will possibly conclude statistics by doing mean, median, mode, central tendency, surveys, observations, field experiment, box and whisker plot, कुछ और करेंगे. वो chapter 9 को, तो chapter 8 और 9 मिला के ये पूरा data handling वाला part will be able to answer. Okay, guys, data handling happens to be the second most asked area on SAP. Part of algebra number 1 है, data handling problem solving number 2. तो इस पे चलो. So first, the first thing that I want to do with you guys is, when it comes to data interpretation, few things that you must know, that let's say if I have a data, and for argument's sake, let's say this data is in a graphical format. Before you attack the question, कुछ चीजें जो मैं हमेशा चाहूंगा कि आप जरूर ध्यान दें. It may take some seconds, but it is worth the investment. Number one, ideally is data का कुछ यहाँ पे heading होगा. Please note that heading, read it carefully. Sales of car in the state of Ohio from 2022 to 23. Rainfall measured month-wise. Okay, salary of people working in different sectors in an economy. Okay, grades of something. So please read the given data. Number one. Number two. So this is the first thing you will do. You will read what's given. इसमें period mention हो सकता है. इसमें type of study mention हो सकता है. तो data क्या है? Sales का data है, income का data है, growth का data है, decline का data है, corruption का data है, whatever that data be, you will have to read that. What's your good name? बैठो, निधिनी. So निधिनी, you are in C4. Class का क्या timing है? 11:30. अभी का time हो रहा है? Yes. So you have realized what I mean. So this is the heading part. Coming down to the first thing you must know. Second thing that I want you to notice कि अगर कोई graphical data है, find out what is given on x-axis. जो कि एक independent variable होगा, what is given on x-axis? Month, name of people, model number, what is given on x-axis, and what is the unit of
what is given on x-axis. वो किस यूनिट में? Okay, वो टाइम पीरियड हो सकता है, किलोमीटर हो सकता है, डिस्टेंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सेल्स के फिगर्स हो सकते हैं. What's your name? चालू. क्लास का क्या टाइम है? क्लास का टाइम बताओ. 11. अभी क्या टाइम हो रहा है ना? ये तो अच्छी बात नहीं है. Third thing we must notice, y-axis पे क्या दिया है. So what is the quantity given on x-axis? What is the quantity given on y-axis? और इसका क्या यूनिट है? This may sound silly कि मैं क्या बातें कर रहा हूँ at the start of the session, but let me tell you, in SAT, it's not so much about intelligence, it is more about awareness. So are you aware about what data is given? या आपने कुछ assume कर लिया? So ये जो यूनिट है ना, कई बार thousands में देके रखते हैं. अभी देखेंगे हम कुछ. And we missed this final point, और वो ऑप्शन में कैसा होता है, मान लो आंसर आया 16,000. So option 1 is 16, option 2 is 16,000, option 3 is 16 into 10 to the power 2, and so on. कुछ और एक fourth option है, none of. ऐसा होता नहीं, but let's say none of them. You are also this class? Yeah. Kim? Yeah. बैठिए. क्या टाइम हो रहा है? नहीं, टाइम बताओ. सॉरी बाद में बोला, थर्ड स्टेप पे सॉरी बोल रहे हैं. 11:43. क्या टाइम है क्लास का? Now you say what you want to say. नहीं, not that. जो सबसे पहले बोला वो बोलो. Please take care. क्या होता है अगर आप लेट आते हैं? बैठिए प्लीज. आप लेट आते हैं तो आप मुझे डिस्टर्ब करते हैं. आप उन लोगों को डिस्टर्ब करते हैं जो टाइम पे आए, बिफोर टाइम आए, है ना? ईशान आ गया था, बहुत पहले आया था ईशान. और ये बच्चे जो ऑनलाइन आए हैं, ये भी टाइम पे आए, इनको एक बेनिफिट भी रहता है. बट एनीवे, टाइम का ध्यान रखो. दैट्स ऑल आई वांट टू से. सो ये फाइनल पॉइंट है. अब मान लो आपका आंसर आया, इसका आंसर आया 16,000 क्वेश्चन. देयर वाज सम क्वेश्चन एंड एज पर गिवन डेटा अगर आपको इसका आंसर मार्क करना है तो आंसर ये होना चाहिए, राइट? नहीं, आंसर ये होना चाहिए. अब वो क्वेश्चन भी डिपेंड करेगा, बट एक आइडियल केस में आंसर ये होना चाहिए. Because data given to you, let's say y-axis का कुछ वैल्यू पूछा है, data given to you is in thousands. So the correct option may be this, depending on question, of course. So the only point I am trying to drive home is take care of the unit. वो कैसे दिया हुआ है? Take care of the unit. तो x-axis पे क्या है, y-axis पे क्या है, heading क्या है ग्राफ का? ये तीन चीजें आप प्लीज नोट से. हम लोग ग्राफ पढ़ रहे हैं आज. ओके, सो SAT में एक सब्जेक्ट दे दिया, डेटा हैंडलिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग. उसमें हम लोग ग्राफ पढ़ रहे हैं एंड वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चंस अगर SAT में आएंगे तो हम उसको कैसे टैकल करें. दैट्स व्हाट वी आर डूइंग. सो दीस थ्री थिंग्स यू मस्ट डू. Fourth thing, see if by observing the given pattern on the graph can you identify a trend. कुछ ट्रेंड दिखता है क्या? देखो, आई डोंट नो, क्या ऊपर जाता हुआ दिखता है, क्या नीचे आता हुआ दिखता है, क्या पैराबोलिक दिखता है, क्या एलिप्टिकल दिखता है, क्या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखती है, एक्सपोनेंशियल डिक्लाइन दिखता है, लीनियर ग्रोथ दिखती है, लीनियर डिक्लाइन दिखता है. कुछ पैटर्न है क्या? जरूरी नहीं हमेशा पैटर्न है, बट है क्या? सी, ऑब्जर्व एंड नोट इट. तो ये सब में बहुत ज्यादा समय नहीं लगने वाला. ये मैं बोल इतना रहा हूं तो आपको समय लग रहा है, बट अदरवाइज व्हेन यू डू ऑल दिस विल बी डन इन वन गो. So see if you can see a trend and you register that trend. Oh, so this is a graph where the growth of bacteria is happening. Oh, this is the graph where population of bears is declining over a month. Oh, this is a graph where the radiations are going down, but after a vertical point, they are again increasing. The parabolic graph है, okay, ऐसा कुछ हो रहा है. So see if there is a trend in the graph and note it and register it. ध्यान रखने के लिए बस. ठीक है? तो अगर दिखे तो वो नोट करो. Fifth, see in your graph, are there some outliers? कुछ outliers हैं क्या आपकी ग्राफ? कुछ ऐसा कोई डेटा है क्या जो outlier जैसे बिहेव कर रहा है? What do you mean by outliers? Saradas, Mahapatra, Nilanjan. If Mahapatra is there, I don't know. No, she's not. Are you there, Sara Mahapatra? You're there, Sara. So what do you mean by outlier?
मुझे इंग्लिश डेफिनेशन भी चलेगा, इंग्लिश डिक्शनरी डेफिनेशन भी बोलो दीदी, टॉक टू टाइमिंग basically a data which is very much different from the other. Yes, absolutely. A data point or sets of data that is behaving very differently from largely the given data to you. सोसाइटी में भी लोग आउटलायर्स होते हैं. अगर आप इसको इंग्लिश डिक्शनरी में मीनिंग देखेंगे तो आउटलायर्स उन लोगों को बोलते हैं जो स्टेटस को चैलेंज करते हैं, जो iconoclast होते हैं, who do things differently. So Elon Musk could be one of the outliers in our society. He thought what others were not thinking, and people were calling him fool, and he did something. Though ये vocabulary की क्लास नहीं है, but similarly statistics में भी एक outlier होता है. And then outlier, हाँ, अच्छा ये तो attendance दे कर दिया आप लोगों ने सबको, अभी दे रहे हो 2 मिनट में फिर आओ. चलो अच्छा है. I was thinking मेरे 3 questions क्या होंगे. तो स्टैटिस्टिक्स में भी आउटलायर्स होंगे और वो डेटा को आउटलायर बोलेंगे हम जो गिवन डेटा सेट से लार्जली डिफरेंट बिहेव कर रहा है. नीलांजन, ये सब क्लियर है? अनम्यूट. Yes, sir. ओके, सो आई वांट यू टू फाइंड इफ यू थिंक देयर इज एन आउट. ये सब समझ में आ रहा है मैं बात करूं? सो 1 2 3 4 5 थिंग्स आई वांट यू टू नो. हेडिंग क्या है ग्राफ का, क्या पढ़ रहे हो आप? Car sales, monthly rainfall, income of people, population, I don't know, growth of dragons, whatever it is. X-axis पे क्या दिया है? Quantity किसी unit का. Y-axis पे what quantity do I have? What is the unit? What's not? Trend है क्या डेटा में? हो भी सकता है नहीं भी, but अगर हो तो उसको नोट करो. और कोई आउटलायर रहेगा तो उसका विशेष ध्यान रखना, जो बाकी डेटा सेट से अलग बिहेव करता है. So let's say guys that I have, अब मैं आगे जाता जा रहा हूँ. So let's say I have got some data which is in a dot form. मेरे पास कोई data है which is there in dot form. And let's say this is sales of Apple i14. Sales of latest launch. Sales of i14 at different days of the month of October. 30-31 days में ये कुछ ऐसा हुआ है across this, and this is in, let's say, thousands of units, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 100,000, 30,000, and so on. Okay. Now, if you have a data where, or if you have a graph where you see कि अगर इसमें points हैं और ये कुछ इस तरह से scattered है plane पे, such kind of graphs are called scatter plots. Scatter plots are those graphs which are from SAT perspective, you know, one of the key favorite popular method by which they will ask you questions. वो scatter plot में questions बहुत ज़्यादा पूछते हैं. You find line based question but बहुत. So scatter plot is something I can tell you 8 question minimum. If you are lucky, you'll get more. आना चाहिए इसका. So if data is scattered on a 2D plane, across a 2D plane 2 axis, this is scatter plot. Scatter plot का यही मतलब है data जो है वो scattered है across these 2 axes. इसको scatter plot. ठीक है? Now, अगर कोई ऐसा data है जो कि scattered है scatter plot पे, there could be a solid line passing through the data. कुछ point नीचे होंगे, कुछ उसके ऊपर होंगे और कुछ line पे होंगे. Okay? Such line is called, ये जो line है इसको क्या बोलते हैं सारादास? Unmute. What is this line called? Sir, right? so line of graph. Line of graph. Very good. Line of best fit. This line is called line of best fit. Thank you, Vijay. Line of best fit. Imagine this to be straight line. So this line is called as line of best fit. Many a times scatter plot will have this line. Sometimes this may not have this line at all.
तो लाइन ऑफ बेस्ट फिट वो लाइन है जैसे ऊपर कुछ पॉइंट्स है, जैसे नीचे कुछ पॉइंट्स है, कुछ पॉइंट्स लाइन के ऊपर है, जैसे यहाँ पे हमको दिख रहा है। ओके, लाइन ऑफ बेस्ट फिट, द इंटरप्रिटेशन, इसका क्या मतलब है लाइन ऑफ बेस्ट फिट का? लाइन ऑफ बेस्ट फिट इज जनरली गाइस द ट्रेंड लाइन, द एस्टिमेट लाइन, द अप्रोक्सीमेट लाइन। इफ आई हैव टू अप्रोक्सीमेट दिस डेटा सेट, मैं इस लाइन से उसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं। This is an estimate line. This may not be exact line. For some months, it will give you exact sales. For other months, basis the trend, it will give you projected sales, estimated sales. I shouldn't say projected, I should say estimate. Projected right word नहीं है, मैं बताऊंगा। It will give you estimated sales. Trend के हिसाब से क्या estimate होगा? ठीक है, आगे बढ़े। अब अगर मुझे इसको projected देना तो let's say डेटा यहाँ तक दिया है और उन्होंने this trend of iPhone 14 का sales, and if this is the data, 30th November को क्या सेल होगा ये बताइए, let's say. So what I will do is I will try and extend this growth, और ये मैं यहाँ पे मैच करूंगा और ये यहाँ पे मैच करेंगे और ये जो फिगर आएगा, this is the projected sales based on this trend line. This may happen, this may not happen. तो ये क्या है? ये लाइन ऑफ प्रोजेक्शन भी बन जाता है। दिस इज लाइन ऑफ बेस्ट, दिस लाइक एन एवरेज लाइन। कुछ पॉइंट्स ऊपर हैं कुछ वैल्यू के साथ, कुछ पॉइंट नीचे हैं कुछ वैल्यू के साथ, और वो पकड़ के नीचे खींच रहे हैं, ऊपर खींच रहे हैं और ये बीच में कहीं आगे बोला बैलेंस। जैसे एवरेज स्कोर ऑफ दिस क्लास इन टेस्ट 1, सम स्कोरिंग मोर देन एवरेज, सम स्कोरिंग लेस देन एवरेज, एंड देन यू गेट एवरेज स्कोर। जरूरी नहीं एवरेज स्कोर किसी का स्कोर हो भी, इट मे हैपन नोबडी स्कोर्ड एवरेज एक्चुअली, but average is representing that data set, है ना? तो line of best fit is representing this category. Any questions till this point? This kind of best fit is always there, Or it can vary. yeah. Okay, so I'll answer the first part. So her question is this line of best fit always there when it will come on SAT paper? मैं तो सिर्फ SAT क्यों जानता हूँ? It may be, it may not be, ज्यादातर ही होती है, okay? क्योंकि इससे वो आपका linear algebra पूरा चेक कर सकते हैं। अगर line of best fit हो देंगे, y is equal to mx plus c, हाँ? मोहना वाशन, y is equal to mx plus c. What is n? Which ones? So I It's the gradient. Now we will talk about this. We thought the French Greek lag raha hai, but it's a shock. So second part, क्या ये graph to graph vary होगा? Because अगर data vary होगा तो graph to graph vary होगा। जरूरी नहीं कि हमेशा ऊपर जाए, है ना? नीचे भी आ सकता है। Number of COVID cases coming from Navi Mumbai, January से लेके अक्टूबर में at various hospitals. Price of crude oil, given the threat of Russia attacking Ukraine with nuclear weapons on a daily basis. And Russia saying, no, 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 we are not attacking. No, but we are attacking. So you don't have a trend line, but we have a trend. I think an arc which is a parabolic. Russia बोलता है वो अटैक करेगा, रशिया बोलता है हम पीस करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। So ये कुछ भी हो सकता है ना? स्कैटर प्लॉट है, स्कैटर प्लॉट का यहाँ पे जो बेस्ट फिट मिल रहा है आपको लाइन में मिल रहा है, पैराबोला में। Am I clear? सारा, नीलांजन and guys here. Yes, sir. ठीक है, तो अब इसको आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने भी क्या किया, हमने ग्राफ को समझा गाइस। इसी तरह से डेटा कुड बी इन दो और चीजें हो सकती हैं, बार ग्राफ फॉर्मेट में डेटा हो सकता है, स्टैक बार, वो हिस्टोग्राम, सिंपल। सो वो जब आएगा तब मैं करूंगा। आई डोंट थिंक I have anything new information for you. You guys already know a lot about it. And two-way tables. Generally,
2-way table ये ज़्यादा भी हो सकता है, but let's say 2-way tables, something like this. So there will be something जो column में होगा, there is something जो row में होगा. So column could be gender, male, female, and rows could be position, winner, losers in a particular game, and you have these cells where you will have some values. Okay, and this is talking about let's say mixed double matches, yeah, India ka tally gender wise in some games. This is 2-way table. इसके cross sections हम कुछ आंसर्स निकालने की कोशिश करेंगे. तो ये जब हम इसका आएंगे we will talk about it. But largely scatter plot, line of best fit, ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है जिसको समझना है. वो समझ में आ गया? हाँ? Yes sir. Okay, बोलो यहाँ पर. Yes, sir. Okay, ठीक है. So question number 2. Classroom exercise 8.1. Question number 2. 2 full minutes. You are not supposed to announce answers. Just raise your hand if you think you have arrived at a solution. Or online में guys, you can do a private chat. Send me UTHO पे अपना आंसर भेज देना. 1 minute. Exercise 8.1, question number 2, page number 87 on it. Just raise your hand if you think you've got an answer. Okay, Sara Mohapatra got your answer. Let me hold before commenting वो right है या wrong है. Take time, read the data, try and understand, then go to the question. हुआ? Good. Yes, Ken. Huh? Yes, that is very important. जिनका क्वेश्चन हो गया है और अगर उनको सीरीज कम इंटरेस्टिंग दिख रही है तो क्वेश्चन नंबर 1 भी कर सकते हैं बस. Okay, so I've got answers here also. Miss Das noted, Nilanjan noted. अभी डिस्कस करते हैं. I'm only reading this problem and I read slowly. The first metacarpal bone is located in the hand. The scatter plot below shows relationship between length of first metacarpal bone and the height of 9 people, which means आपके ग्राफ में 9 dots होने चाहिए अगर 9 people का ये डेटा है. The line of best fit is also shown. ये real SAT problem. Okay, that's the one that we are doing. अब heading क्या है? Height of 9 metacarpal, height of 9 people and length of their first metacarpal bone. X-axis पे है length of first metacarpal bone in centimeters, and then I look at the axis. I go ahead. Y-axis पे height, of course height of people, again in centimeters, and then again I look at the axis. 155 के बाद 168, उसमें कितने divisions हैं मैंने ये नोट किया. 4 के बाद 4.5 है x-axis पे, उसमें कितने divisions हैं मैंने ये नोट किया. After I have done all this, I go ahead and I read the problem. Problem statement is, how many of 9 people have an actual height that differ by more than 3 centimeters? Height of people differ by more than 3 centimeters. From what? From the height predicted by line of. So I will call upon Abhyuday. Which option are you defending? B. B. B.
Not done. B. Charul. Easy. Majority can be wrong. क्लास में majority wrong होती है. तभी ऐसे कि कुछ लोगों का स्कोर परफेक्ट आता है. A. No, don't ask me. I am asking you. A. बोलो दीदी. Don't know no objection. C. C. A. And यहाँ पे नीलांजन C. नीलांजन हो गया तुम्हारा ना. नीलांजन C and Sara, दोनों सारा का B, right? Okay. And Sara Mahapatra answered it first. And she answered it correctly. ठीक है, अब देखते हैं B क्यों. And why not A? The good thing is, or bad thing is, ये चारों आंसर दे दिया आप लोगों ने. A, B, B, C, D. So that means कुछ लोगों को क्वेश्चन क्लियर नहीं है. So my dear friend Abhyuday, please read the question loudly. नहीं क्वेश्चन पढ़ो. डेटा समझ में आ गया ना गाइस? 9 लोगों का डेटा है. एक्स एक्सिस पे उनका मेटाकार्पल बोन है, वाई एक्सिस पे उनकी हाइट है, दोनों सेंटीमीटर. चलो क्वेश्चन पढ़ो. हाउ मेनी ऑफ 9 पीपल आगे बढ़ो. Actual height that differs from golden is different from the height predicted by the line of. ठीक है. I'll go to where motion of screen पे आएंगे. इस क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट. ये क्वेश्चन दिख रहा है सबको? चलो अभ्युदय, what do you mean by this particular problem? ये 9 लोगों में कितने लोगों का एक्चुअल हाइट प्रेडिक्टेड हाइट से 3 सेंटीमीटर या ज्यादा डिफर करता है? ओके, वी गो टू ईच ऑफ द पीपल. चलो सबसे पहला डॉट लेते हैं. क्या ये वाला डॉट क्लासिफाई करेगा? क्या इस डॉट की हाइट जो है वो प्रेडिक्टेड हाइट से 3 सेंटीमीटर के डिफरेंस में है? कैसे? ये पॉइंट को कैन आई से दिस पॉइंट इज 161.5. ये वाला ये प्रेडिक्टेड है इस डॉट के लिए, मगर इसका एक्चुअल हाइट इज कैन आई से 157 और 1 सो सॉरी, ये ना माउस से लिखना इज अ पेन. सो 157 और 161 में 3 से ज्यादा का डिफरेंस है. तो ये तो वो पर्सन है जिसको क्वेश्चन ढूंढ रहा है. व्हाट अबाउट दिस सेकंड डॉट? नहीं. व्हाट अबाउट दिस थर्ड डॉट? व्हाट अबाउट फोर्थ डॉट? फिफ्थ? सिक्स्थ? नो. सेवेंथ? यस. ये वाला? व्हाट अबाउट दिस वन? नो. ये 2 पे ही है. अगर आप देखेंगे there was nothing to calculate. This was a simple सा problem of visual inspection. Read the data, understand, look at the graph, find, move it. आप क्या समझे इस क्वेश्चन से? तो आप अगर इसको आप गलत कैसे कर रहे हो? इसको 9 के 9 लोग तो नहीं है ऐसा. नहीं, मैंने वो क्वेश्चन गलत पढ़ दिया, फिर लेंथ ऑफ कार्ड बेटा कार्ड पर इनका दे. ऑफ कोर्स गलत पढ़ लिया तभी गलत आया, नहीं तो ये सही होगा. दिस इज इजी प्रॉब्लम. समझ में आ गया? गॉट इट गाइस? निरंजन? Yes, sir. क्वेश्चन 3. इसके लिए आई गिव यू ओनली 45 seconds because data remains the same. डेटा सेम है तो डेटा समझने में कोशिश नहीं करना है. प्राइवेटली भेजना मुझे UTHO पे. ओके सारा? Based on line of best fit, what is the predicted height for someone with a first metacarpal bone that has a length of 4.45 centimeters? Okay. Good. Option बताओ मुझे कौन सा? Yes. Yes. नहीं. वापस करो. Correct. Let's do again. You still have time. Let's do this once again. Look at it carefully. So I've got 3 answers here.
Sarah and both Sarahs, I've got your answer. Nilanjan, I'm waiting. I was listening. The swimming time versus heart rate. हाँ वो क्योंकि क्वेश्चन ना नेक्स्ट पेज पे आ गया तो वो रिलेट नहीं हो रहा है हाँ सो ओके ठीक है तो आई शुड टेल यू दैट दिस इज रिलेटेड टू द प्रीवियस ग्राफ हाँ करेक्ट सो निरंजन प्लीज अनम्यूट एंड अनाउंस योर आंसर Sir, C option. सी ऑप्शन ईशान सी चारुल डी राइट नाउ लेट्स डिबेट दिस आउट हाँ रीड द प्रॉब्लम लाउडली जोर से पढ़ो क्वेश्चन को Based on the lines of the what is the predicted outcome of the first the 4.45 सेंटीमीटर क्या पढ़ा आपने मैडम 4. So this is what I said. So मैंने आपको पहले ही बोला it's not about intelligence. If I give you more time than expected, आप इसको क्रैक कर लोगे बार-बार पढ़ के. But अगर आप अवेयर नहीं हो कि पूछा क्या है तो गड़बड़ हो जाएगा. So it is 4.45 centimeters. 4.45 centimeters. ईशान जो तुमने पहली बार में गलती की. So 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5. So 4.45 would be somewhere in between. यहां से एक लाइन बनाने की कोशिश करो जो कि एकदम स्ट्रेट हो अभी तक तो सक्सेसफुल हो नहीं गड़बड़ हो गया बट एनीवे इट इज कटिंग समवेयर हियर राइट नाउ इफ यू लुक एट दिस गाइस अगर मैं ऑप्शंस में जाता हूं बिकॉज़ मुझे वहां स्केल इज नॉट अलाउड सो इफ आई हैव टू डू समथिंग ऑन एसएटी पेपर इफ आई डू दिस 168 फॉर श्योर नॉट 168 आप देखोगे यहां कहीं आ रहा है 168 ये तो नहीं होगा 169 से ऊपर जा रहा है because one unit is I think 2 क्या 66 67 68 69 170 most probably and 171 तो बहुत ऊपर जा रहा है तो आंसर होगा 170 171 तो 4.5 पे आ रहा है hence not D okay answer is options visual inspection nothing to calculate that is the best part of such problems and जैसा मैं बोल रहा हूँ if you guys are lucky एक डेटा सेट आएगा और उसके ऊपर 2-3 प्रॉब्लम्स आएंगे तो मतलब अगर वो डेटा सेट समझ लिया तो बस देखते जाओ सॉल्व करते जाओ एंड हाई एक्यूरेसी unless and until 4.45 to 4.5 पढ़ लिए तो गड़बड़ है when you assume but okay are you getting it आगे बढ़ें I want you to solve question number थोड़ा है ना 10 question number 10 guys 10 इसको करो beautiful problem let me give you 48 seconds हाँ सही सोच रहे हैं आप सेम डेटा है ओके सो सारा आपने आंसर भेज भी दिया है ओके परफेक्ट वेरी गुड and we will start this discussion with you Sara Mohammad we'll start with you to understand why what you're saying is the answer. Which of the following is the best indication of slope of line of best within context of this problem? So I'll give immunity to Charul and Nidhini. If आप लोग शायद ये लाइन ऑफ स्लोप वाला कॉन्सेप्ट आपके साथ नहीं हुआ है बट फिर भी ट्राई करो बाकी सबके साथ हुआ है हाँ हो गया ओके गुड nice so we'll have a lot of debate which one but this is a good method where I recommend this method जैसा एक टीम ने किया let's we try to eliminate few options कि ये तो पक्का आंसर नहीं होगा पढ़ने से लग रहा है that is some good method to do this one what happened to you guys आपने आंसर भेजा है मुझे कुछ भी नहीं है चैट में सिर्फ सारा का एक आंसर है बाकी नहीं है सारा दास नीलांजन Yeah, sir. 1 minute. okay चलो
डिस्कस करते हैं अभी तक एक प्रॉब्लम भी ऐसा नहीं आया जो पूरी क्लास का सेम ऑप्शन है. It's not about right and wrong, but that's good because then that generates debate. Okay. 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 So class is divided between two options only this time. Either A or B. What's your answer? Both. I would say. No, but you have to pick one. So class is divided between A group and B group. Okay. So how many of you got B in this class? So यहाँ पे है सारा दास and Nilanjan, Ishan, Chinmay, Charul and Mohanav Raj. Papa. There's nothing like that, Papa. And then how many of you got A? So Sara Mahapatra, Kshitij Mittal, Abhyuday came. And I said that I'll start with Sara Mahapatra, but I changed my mind. We start with Chinmay Rana. Let's see why B and why not any other option. ठीक है? उसके लिए पहले question पढ़ना. And go slow, but be loud. पढ़ो. Which of the following is the best interpretation of the slope of the line, best fit in context of this problem? Hold on, हाँ. So ये मेरा line of best fit है. इसके slope का interpretation देना है. ये क्या है? Metacarpal bone का length. ये क्या है? Height. दोनों सेंटीमीटर में. चलो भाई. Slope of this line, इसकी जो भी slope है, x y1 minus y2 upon x1 minus x2 जो भी slope आएगा इसका, जिसको हम m बोलते हैं gradient slope of this line, इसका interpretation देना है. Option B पढ़ो. The predicted first metacarpal bone increase in centimeters for every centimeter increase in height. ठीक है? सारा महापात्रा प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ और बताइए बी ऑप्शन में क्या प्रॉब्लम है. व्हाई नॉट बी? The B option tells that the thing that is being predicted is the height of metacarpal bone, but actually metacarpal bone का जो height है वो तो x axis ही है, means that is fixed. So the slope here is giving us y coordinates, that is height of the person. So the thing that is getting predicted is the height of the person, not the height of the metacarpal bone. ब्यूटीफुल, वेरी गुड बेटे. इफ यू अंडरस्टैंड, जब मैंने क्लास चालू किया था, what did I say? यहाँ पे कौन, what type of variable comes on x axis? Independent variable यहाँ पे आता है. यहाँ पे independent variable आता है. यहाँ क्या आता है? अगर कुछ independent है तो कुछ dependent होगा. यहाँ पे हमेशा dependent variable आता है. Unfortunately, स्कूल में ये बहुत फास्ट पढ़ा देते हैं तो समझ में नहीं आता. This is independent, not dependent on any factor. This is dependent depending on this. So this slope will tell me what is the predicted height given the length of metacarpal, not the ulta, because n होता है y2 minus y1 upon x2 minus x1. y2 minus y1, we are talking about rate of change in height for given small change in metacarpal bone. So predicted height of a person for a given, ठीक है. अब आप ऑप्शन बी पढ़ोगे तो आपको लगेगा ये उल्टा है. नीलांजन, क्लियर हुआ ये? Yes, sir. आंसर इज ऑप्शन. अब पूछो जिसको समझ में नहीं आया. व्हाट वाज योर आंसर? ठीक है. हाँ, के मोहिते, क्लियर गाइस? मोहनवासी, यू टेकिंग टाइम टू सिंक इन. नहीं, बट यू डोंट हैव दैट टाइम. मुझे बताओ क्या समझ में नहीं आया इसमें. आई विल गो अगेन इफ यू वांट मी टू. आई नो हैव पेशेंस विद मी. मैं बता दूंगा. हाँ, और नहीं, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द स्लोप ऑफ लाइन. 11th में मैथ्स फिजिक्स में पढ़ा था. यस, पीसीबी वाले मैथ्स लिया है नहीं, कोई बात नहीं. सो थोड़ा सा पेशेंस रखो मेरे साथ, मैं करवाता हूँ आपको. राइट सारादास, गुड टू गो. बोलो, ये समझ में आया क्या? सो गाइस, ये ऐसे बहुत क्लोज ऑप्शंस होंगे, एंड दैट्स व्हाई आई सेड आई लाइक दैट मेथड वेयर यू एलिमिनेट ऑप्शंस. जैसे ऑप्शन सी पढ़ो ऑप्शंस. How can slope of line give you a fixed value for metacarpal bone being 0?
अगर मेटाकार्पल बोन 0 है तो आइडियली वो आदमी एग्जिस्ट नहीं करता है, उसकी कुछ हाइट नहीं होगी, वो स्लोप नहीं हो सकता, वो कांस्टेंट होगा। आंसर कैन नॉट बी ऑप्शन सी फॉर श्योर। ये पढ़िए। The predicted first metacarpal bone length centimeter for a person with the height of 0 centimeter. डीबी वैसा ही, सीडी तो पक्का आंसर नहीं हो सकते। हाँ कैसे? The x axis में जो मेटाकार्पल बोन का जो रेंज दिया हुआ है वो 4 to 5 दिया है और फिर 0 सेंटीमीटर को वैसे एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि ये 0 होगा। लिखा है But there's something, you're right about that, but what I'm saying is there's something called extrapolation. From the given data set, I can extrapolate both things. Extrapolate कर रहा हूँ। अभी हम लोग सब इंटरपोलेशन कर रहे हैं, लाइन के अंदर की पॉइंट्स ढूंढ रहे हैं। एक क्वेश्चन करते हैं, मैं बताता हूँ। तो ये फिर जरूरी नहीं है जो आप लगा रहे हो। 3 मेटाकार्पल बोन पे भी कुछ हाइट होगा, और इसी तरह 7 मेटाकार्पल बोन सेंटीमीटर के लेंथ पे भी कुछ हाइट होगा। थियोरेटिकली हो सकता है 8 फीट का आदमी नहीं होता हो, बट theoretically possible हो सकता है। चलो, so now I want you to go to a very different set। अभी तक जो कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा इवॉक कर रहे हैं बट चलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आओ गाइस। फॉर क्वेश्चन नंबर 5 आई गिव यू फुल 1.5 मिनट्स। ध्यान से पढ़ना, डेटा समझना, उसके बाद क्वेश्चन को अटैक करना। एंड अभी तक आपका वो डाउट इसमें भी क्लियर करूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 ऑन योर बुक, 1.5 minutes. Send answers privately. Wow, good. वापस पढ़ो उसको, क्वेश्चन को वापस पढ़ो आप। देखो so online में I've got one answer from Sara Das. Where is Nilanjan and Mohapatra? Mohapatra is not there. Okay, Nilanjan. Done? Discuss. Yeah, question number 5. Is data understood? Nilanjan, is data understood? Any problem in understanding the graph? Yes, sir. I didn't understand the graph. Okay. Anyone else who have not understood the graph? What is this graph all about? Abhyuday? Ishan, explain the graph. What is, so only explain me the data. I am not looking for answer. What is this graph talking about? So it is talking about the number of years of the experience of an employee, and their income is depending upon that. So Nilanjan, if you look at what this graph is talking about, this says income based on years of experience at company X. अगर आप उसको देखोगे, so if in some company which is company X, if there is somebody with 0 experience, उसका क्या salary होगा in thousands. अगर वो 5 years of experience पे है तो उसका क्या salary होगा in thousands. ऐसे लोगों को plot किया है और फिर एक line of best fit उन्होंने बनाया। ये data 25 years of experience तक है basically, where they are saying किसी के उस experience पे क्या salary होने वाला है। Okay, and salary is given in thousands and year of experience is in year of experience. 0, 5, 10 and so on, increment of 5, और वो है 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 and so on.
बोलो guys, है ना? So Nidhini, if I ask you, what is the salary for a fresher joining company X? $20,000. If you are a fresher, Nilanjan, दिख रहा है आपको उसमें आपका सैलरी होगा $20,000, है ना? Let's come down to the question. ये डेटा समझ में आ गया? इससे कुछ नहीं है. This Scatterplot above shows income in thousands of all employees of companies based on the year which is in. Okay. Based on the line of benefit to the data represented, which of the following is closest to the expected number of years of experience of an employee? So the income is $30,000. $30,000. हाँ भैया, मित्तल जी, let's start with you. क्या आंसर है? A, B, C, D में से बोलो. B. चिन्मय. A. B. B. A. B. B. And the teacher of the question based on the time of the next. हाँ. What is under what actually are. अगर किसी की $30,000 सैलरी है, $30,000 सैलरी है, तो लाइन ऑफ बेस्ट के हिसाब से उसका ईयर ऑफ एक्सपीरियंस कितना होगा? That's what they are asking. A. So Kim Mohit, which option are you defending? A. है ना? हाँ? A. So Kim will help you understand why this is wrong. चलो Kim. $30,000 per year. $30,000. So as per line of best fit, ये देखो, ये जो मैंने एरो बनाया है, ये होगा किसी का एक्सपीरियंस गाइस. इसको नीचे लेके आते हैं. इस लाइन को ना धीरे धीरे नीचे लेके आऊँ. डैश लाइन में लेके आ रहा हूँ मैं. बहुत ही क्रूकेड वे में ला रहा हूँ मैं, बट दैट्स ओके. ये समझ में आ रहा है? ये नीचे आ रहा है. Okay, now let's look at the options. SAT में options are additional information, and this is not only true with SAT, this is true with any aptitude test for you, right? IPM, CAT, GRE, कुछ भी लिखोगे, option additional information. So answer पक्का 5 से तो ज़्यादा है guys. Okay, 37 years, 74 years. So which is the next best option? Even if you cannot actually visually find it out, or still देते नहीं है वो लोग, and you cannot do any calibration here, you for sure know answer C or D absurd है, option rather C or D absurd है. A से तो ज़्यादा होना है. The best option I have is 5.55 years. Saradas. Yes, sir. क्या आंसर था आपका? Sir, D only. Okay, great. ठीक है? What are the slots between 5.55 and 5.7? Then that is not a SAT problem. ऐसा नहीं कर सकते, because जैसा मैंने बोला, स्केल नहीं दिया, कैलिब्रेशन नहीं दिया, और अगर एक ऑप्शन दिया 5.55 और एक दिया 5.75, तो SAT का क्वेश्चन नहीं. कुछ और डेटा चाहिए अगर उतने लेवल ऑफ एक्यूरेसी पे जाके आंसर. ठीक है ना विजय? You know, 2 options are possible. SAT में नहीं होता, एक ही ऑप्शन हमेशा रखना आंसर. तो फिर वो SAT का प्रॉब्लम नहीं है. तो अगर आपने फ्लिप किया, आई वांट यू टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6. नहीं, आई डोंट वांट यू टू सॉल्व दिस, वी जस्ट डिड दिस. वी जस्ट डिड क्वेश्चन नंबर 6. देखो, है ना? सो क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व नहीं कर रहे हैं. सारा मोहब्बत, आई थिंक वी लॉस्ट यू इन बिटवीन. हमने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 किया है अभी. ठीक है? You are not frozen, but I don't know if you can hear me. Question number 7, guys. Question number 7 करो अपनी बुक में. Sara, you can keep, Sara Mohapatra, you can keep your video off if you think off रखने से ज़्यादा अच्छी bandwidth मिलती है and you are able to attend class seamlessly. क्योंकि मुझे लगता है आप बहुत ही ब्रेकेज हैं आपके वीडियो. किया बहुत जल्दी किया तुमने. अच्छा, तब ठीक. ओके, ठीक. Show me. Thanks, Ashin sir. Good. So same data, you don't have to worry. Correct, very good. Dikhao Ishan. Very good. Yes. Yes, correct. Correct. So I have not found a single student classroom के अंदर who have got this wrong.
So now my next question will be, हाँ आप दोनों का भी सही है. Sara Mohapatra, Sara Das, and Nilanjan, correct answer is option C. Okay, but this doesn't end here. I want to know how C. So can you please read the problem loudly from question number 7 for me? Yes, sir. But I'll skip that part where based on the line of best fit to data represented, which of the following is the expected income of an employee with 35 years of experience? So 35 years of experience, what will be the expected income? The data is only for up to 25 years of experience. So of course, extrapolate करना पड़ेगा, इसी trend को continue करना पड़ेगा, and you have to find. Yeah. अच्छा. So what Nidini says, obviously A or B तो नहीं है, because $61,800, 25,000 से 25 साल से कम experience पे है ये salary, and we are talking about 35. 65 is possibly at 25 years of experience, and if this trend continues, 35 पे 35 है क्या? हाँ. So A और B answer नहीं हो सकता, C and B. Why C? Because it's the closest option. Closest to what? It's a higher value. So Higher to what? 96 is higher, but higher to what? 83. But why did you, first of all, आपने pivot 83 पे क्यों बनाया है? Okay, so one method I can see in this class is, this method is called guesstimate, bracket में lucky. But why 83? Any other method? So एक मौका यहाँ पे भी देते हैं. Guys, online में कोई बताना चाहता है why 83? वो guesstimate वाला method, lucky, you were lucky, आपका आंसर राइट आ गया, and I respect you for that. But in class अभी ये नहीं चलेगा, तो और क्या कर सकते हैं? Is there a logic? 5 years of experience. 83,000, no, 35 years of experience. You calculate it with 83,000. You know? So you're happy with experience. And you second that opinion. Yeah. Chalo, let's see. So what girls out here are saying, ये ऐसा बोल रहे हैं, a group of girls, they say that for every 5 years, the income increases by $10,000. पहले first 5 years में हुआ नहीं, थोड़ा सा कम है 10,000. Approximately हो जाएगा. तो 25 पे 65 है, तो 35 पे जाएंगे, तो 85,000 होना चाहिए. 85,000 के 83 क्लोज है. ठीक है. Anything else? मेरा टीवी खराब हो जाएगा कि मैं करता, तो तुम ये बोल रहे हो मैं ये लाइन कैसे बढ़ाऊंगा? Okay, so guys, I have another method from class और फिर मैं ऑनलाइन भी जाता हूँ. So वो बोल रहे हैं इसको बढ़ाओ, इसको बढ़ाओ. ये God, this is हाँ स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन बढ़ाओ, वो 30 और ये पेज के आगे निकल जाकर 35 तक और बढ़ाओ, वहाँ पे लाइन और कुछ करो ऐसा. And 83 other posts. इससे वो पहले वाला मेथड फिर भी कम वाइल्ड था. वाइल्ड नहीं था. Any other method? Can you do this problem logically? Let's say one option is 83, the other option is 85. आपने मुझे किसी ने पूछा था ना, what if 5.75 हुआ था? मैं बोलता हूँ ये 96 नहीं 85. ऑनलाइन में आप मुझे बता सकते हैं 83 लाने का और कोई तरीका. So I got two methods: guesstimate lucky method, then extend करके 85 वाला method किसी लॉजिक से 10,000 5 years और वो करके 85. और देखो ultimately आंसर मैटर्स, आंसर आ गया आपका. But I still want to figure out and understand how the method is correct. See, no one. Slope निकाल के, क्योंकि ये straight line है, I can find the slope of this line. Okay, let me take these two extreme points. ये दो extreme point ले रहे हैं नीलांजन. ये वाला point ले रहे हैं y1 x1, ये वाला ले रहे हैं y2 x2, उल्टा x2 y2 x1 y1. सारा दास, महापात्रा, is that fine? तो ये बच्चे बोल रहे हैं do slope. Yes, sir. तो मैं slope पे जाता हूँ. Slope of the line निकालते हैं. Second कैमरे पे इधर आता हूँ. Slope of line. Slope of line. याद रखना x2 minus. Okay. So slope of line निकालते हैं. M is equal to y2 $65,000 thousands minus y1 कितना $20,000 है ना, upon x2 25 minus 0 25. So this is 45 upon 25
5 nines are 5 fives are thousands. Okay. So 9 by 5. 9 by 5 is 1.8. 1.8. Thousands. Dollar 1800. What does this mean? Dollar 1800. For every year. With every year, an increase in experience, delta X. हर साल experience X से बढ़ेगा या for every 1 year increase of experience, salary goes up by $1,800. So if salary of person is S, 18,000 into years of experience Y, ये Y से बना, आप उसे confuse मत होना. So let's say years of experience is X, salary is Y, plus starting value. Starting value, initial value, value of Y when X is 0 is this constant C. Y is equal to N into X plus C. ये मेरा equation हो गया. अब आप मुझे कुछ भी पूछ सकते हैं. So you are asking me, give me the salary of the person when that person has 35 years of experience. 35 into this profit. तो बोल दो इसको 2000 मानो. अगर ये 2000 होता और 35 में मल्टीप्लाई होता तो 70,000 आता. 70,000 आता. बट ये 2000 नहीं, 1800, 200 कम है. 200 into 35. 700 कम कर लो, 7,000 कम कर लो. 63 plus 20. 83,000 सैलरी होगा इस बंदे का. With 35 years of experience. बोलो guys. Taradas. Sir, I prefer the graph extend wala method. ओके ठीक है. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में समझ में आएगा. बट बात आई अंडरस्टैंड. मुझे लग रहा है तुम्हारे चेहरे से यू आर बिट एंग्री विद मी कि ये सब क्या कर रहे हो आप. ग्राफ वाला मेथड ज्यादा अच्छा है. अभी ठीक है. बट दिस इज हाउ वी गेट इट. अगर एक ऑप्शन 83 और एक 85 है तो ये कर लेना. ठीक है. बट होल्ड ऑन टू दिस. ये सब समझ में आ गया आप लोगों को. So ऐसा नहीं है. आगे के दो क्वेश्चन की बात नहीं है. बट सारा यू आर राइट. देखो बट व्हाट इफ ऑप्शन था 83 85 then you do this. But otherwise you can prefer whatever estimate and luck you want to try. But actually हो ये रहा. आप लोगों के साथ मुझे ये वाला पार्ट अभी करना है. तो इसलिए वो थोड़ा सा भी लग रहा है कि बार-बार n कहां से कर रहे हैं हम और ये क्या करना है. बट रखो ठीक है. अभी तो वैसे ही करो ग्राफ को. बट आई टेल यू ये कैसे करें. क्वेश्चन नंबर कौन सा आगे के. 8 and 9. Now I want you to solve 8 and 9 together. 8 भी करो 9 भी करो. दोनों एक साथ करो. तो सबसे पहले क्या करें. 9 करें. चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे. 9 हुआ नहीं है भाई. 9 हुआ नहीं है. क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे हम लोग पहले. सारा, नीलांजन एंड सारा. We do 9 first. ये बोर्ड पे लिखा हुआ है. व्हाइट बोर्ड पे बोलो ABCD. A D ईशान. 9 ABC नहीं चल रहे हैं. तुम्हारे करोड़ों का नुकसान नहीं होगा. A ईशान बोलो. नहीं 1 क्या यहाँ पे लिखा हुआ. बोलो A D चारुन. A और D 50-50. Answer will not be D this time. क्योंकि ग्राफ thousands में दिया है guys. Answer would be A. Because value of Y will be some number into 1000. Y is salary. So Y into 1000 will be that salary. Okay, Sara, Nilanjan. Answer A होगा 9th का. Sir, A. 8. अभी किया B. 8 का भी है. Which of the following is closest to average increase in income per additional year of the experience? Per year पूछा है. ठीक है. I've seen generally students marking 9,000 और वो भूल जाते हैं वो 5 साल में हो रहा है 9,000. Per year बोला 1,800. Okay. ठीक है ना. बोलो. Yes, sir. ठीक है.
question number. What's number you watch? 26. Okay. So we go for 5 minutes water break. 12:30. 8. So उसके बाद से जा रहे हैं 12:38, 12:43 by her watch we meet again 5 minutes. So thank you. So what will happen is आप आगे जा सकते हैं इनको बाहर जाना है. पुष्पलता आप वीडियो पॉज कर दोगे, रिकॉर्डिंग पॉज कर दोगे. Challenge one. This must be there on the book somewhere. Any question? So let's do this 1 minute's time. There are options there. Please solve this. Okay, Saradas, hold on. This is challenge question 1. Basically, challenge question 1. Yes, this one. Okay, then in that case, so there's no question as to how to The question है तो ऊपर का direction ही नहीं. Which says, okay, ऊपर का direction is during the 2014 season, and read these lines, and then there is question in your book. Those वो जो mother data set है वो missing है. So you have to read those 4 or 5 lines and then attack the question. A player's average minutes played per game to average points scored per game for each player of the team. If the plot looks like this, the question is, which are the following equations, and those equations are there as option in your on your book. Which are the following equations best predict minutes played per game X and points scored per game P for player of on this game, on this team. on this team. Okay. So P stands for points and X stands for minutes played per game. And P stands for points scored per game. And dot, each dot is a set. Okay. Fair enough. Okay. Yeah, we will find out. Correct. Ishan, where are you? So again, I'll be interested in 2 things. Of course, I will be interested in which option is your answer. And I'll be more interested in how you got to that option. इसमें भी मुझे लगता है elimination as a method can help you. Even अगर M का concept उतना clear नहीं है तो भी elimination से हम answer तक पहुंच सकते हैं, पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं at least. So these are the 4 options. Option A is P is equal to 2x minus 2. Option B, P is equal to 2x plus 3. Option C is P equal to 0.5x minus 2. And option D, P is equal to 0.5x plus 3. So let's see, are there any answers in the chat? Sarah, I think you gave answer, right? आपने option B दिया है, Nilanjan D and Sarah Mahapatra C. Let's साहब बोलिए. हाँ? A. C. तो अभी तक क्या क्या चल रहा है? ABC चल, ABD चल रहा है. हाँ, ABCD सभी चल रहा है. Confused. C.
C, A, B, C और D। ऐसा अनफॉर्चुनेटली रेसिपी में नहीं होता, यू हैव टू पिक वन, और अगर ज्यादा ऐसा हो रहा है देन यू कैन डू इना आइना माइना और समथिंग लाइक दैट। बट चलो लेट्स सी why C? Answer is option C. How many of you got it right? 1, 2, 3. Online में who got it right? Answer is option C. Sara Mohapatra I think got it right. So सबसे पहले ना let's try and rule out some options. So A कितने लोगों का आया आंसर? A. Anybody A? Sara Nilanjan? Nobody A. So let's see why not A. कैसे rule out करें, क्या करें इसको कि आंसर A नहीं होगा, ये कैसे पता करेंगे? तो देखो कुछ चीजें करते हैं. This is the scatter plot that is given to me, guys. If by any chance I get to make a line of this, and it will be very difficult if I do it right now. बहुत difficult होगा क्योंकि मैं माउस से कर रहा हूँ, but आप कर पाओगे अपनी बुक में. अगर इसका कुछ line of best fit होगा, no, I don't think I'll be successful in making a line. But let's say if this is the line that we have, इसका कुछ straight line imagine करो. So this is the line of best fit that we are talking about. ये कुछ ऐसा line है. अगर ये line of best fit है मेरा, जिसका y इंटरसेप्ट कहां जा रहा है, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? नेगेटिव। अगर ये लाइन देखोगे तो ये लाइन नीचे जाके कहीं y एक्सिस को काटेगी, है ना चारू? ये कुछ y एक्सिस को नीचे काटने वाला है. तो ये कॉन्सेप्ट में लाइन से सॉल्व कर रहा हूं, दूसरे मेथड से भी करते हैं. तो इफ दैट हैपेंस, इफ दिस इज द केस, आंसर कैन नॉट बी ऑप्शन बी एंड डी. बी और डी तो दो आंसर हो ही नहीं सकते क्योंकि उनमें +3 दिया हुआ है. For x equal to 0, you get PS3, and option D में also if you put x equal to 0, you get PS3. So B or D तो आंसर नहीं हो सकता. The fight is between A and C. How do we choose between these A and C? Which option are we defending? नहीं, C नहीं. A वाले कोई defend करेंगे. How do you choose between A and C? What do you do? What have you done to choose A and not C? But if you need the best, so it starts from the minimum. So सबसे नीचे का पार्ट और सबसे आगे जो उसको अगर आप ज्वाइन करोगे तो उसमें 33 अराउंड 3350 वाइट एक्सटर्नल. So क्षितिज एक ही प्रॉब्लम है इसमें. एक लोअर पॉइंट दिया, एक हायर पॉइंट दिया और उन दोनों को ज्वाइन करके स्ट्रेट लाइन बनाया. इसमें एक ही प्रॉब्लम है, यू डोंट नो वेदर दिस लाइन इसको ऊपर शिफ्ट करके लाइन ऑफ बेस्ट फिट है, यही लाइन ऑफ बेस्ट फिट है कि इससे नीचे. तो ये बहुत बड़ा अजम्पशन है कि जो एक्सट्रीम के डेटा है इसको ज्वाइन करके जो लाइन मिल रहा है वो लाइन ऑफ बेस्ट. तो उससे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? उससे अच्छा तरीका ये हो सकता है जो मैं बोर्ड पे जाऊँ और ये ग्राफ आपके सामने, हाँ, ये हैंडी रखना. यू विल नो नाउ व्हाई आंसर इज सी एंड व्हाई नॉट ए. दिस यू शुड डू व्हेन इट कम्स टू ग्राफिकल क्वेश्चन. तो बिना एम के कॉन्सेप्ट के कर लोगे. एक टेबल बना, ये फंक्शंस में शायद सर ने पढ़ाया होगा. फंक्शंस किया ना चैप्टर 10 में किया होगा. You take x and y and take some values of x and try and get values of y for both the equation. तो पहले कोई भी एक इक्वेशन लेते हैं. a ले लो, पहले a ले लो. तो x ग्राफ से देख के बताओ पहले x क्या है? 3. अगर x 3 है, इक्वेशन a में x 3 रखो, y की वैल्यू बोलो +4. ये तो वहां तो 0 आ रहा है y. नेक्स्ट कोई पॉइंट लो x का. 6 लो +10 +10. एक और वैल्यू ले लो कोई, उसके नेक्स्ट 9 x को लो 9 +16 +6 से बराबर. Right, this is my option A. Let's come down to option B. X and y. X equal to 3. एलिमिनेट कर दिया. नहीं, B नहीं, कौन सा दूसरी? C. B और D एलिमिनेट कर दिया. ऑप्शन C, इन दोनों में टाई ब्रेक कर दिया. Put x equal to 3. -0.5. 6 1 9 2.5. ये सब इक्वेशन लाइन ऑफ बेस्ट फिट से प्रोजेक्टेड वैल्यूज है. एक्चुअल वैल्यू क्या है? x equal to 3 पे 0 6 पे 2. ये एक सेट ऑफ वैल्यूज है, ये एक सेट ऑफ वैल्यूज. Which is more closer? Answer is option C. अब अगर हमको M नहीं आता, C नहीं आता, एलिमिनेट नहीं कर पा रहे, तो आप क्या करेंगे? अभी के लिए आप A, B, C, D चारों बनाएंगे.
and you will not test for one value, you will check for let's say 5-6 times. थोड़ा सा lengthy होगा, but at least surety of answer है. Sorry. I want a gradient of the best. So वो best fit line का है. वो assume किया ना जो क्षितिज बोल रहा है. अलग तरीके कैसे निकाला? जैसे y में 0 to 16 किया हुआ है and then x is 0 to 33. So I took that as y to minus 7. वही है इसने भी वही किया. बट मुझे नहीं मालूम वो जो y1 y2 है वो लाइन के पॉइंट्स. Gradient I got 7. अच्छा, gradient 0.5 bias. And then I got Interesting. So interesting, right है. Okay, ये सही है. But what I'm saying is यहाँ पे एक छोटा सा assumption क्या हो गया आपसे, ये दोनों पॉइंट मेरे लाइन के पॉइंट हैं. So you were lucky, I'll say. It may happen, it may not happen. The points that you picked. बहुत divergent भी हो सकते हैं, बहुत दूर हो सकते हैं, outliers हो सकते हैं वो lines. ये देख के पता नहीं चलता. But I think क्योंकि concentration ऐसा है, फिर भी safe assumption. Concentrated data है ना? Concentration ऐसा है कि वो लाइन के आसपास ही होगा बता. ठीक है guys, Nilanjan, Sara, can I go ahead? Yes, sir. Question number 20 on your book. 20. Book पे 8.1 exercise का 20 question. 20. This is table-based data real SAT problem. And nothing to do with line of concept. अब सब कुछ simple है. Well, question number 20. I'll give you 2 minutes. Calculator. Yes, calculator allowed. If you want to use calculator, it is allowed in this problem. If you want to. Sir, in SAT as well, have to use scientific calculation. No, not mainly. Simple calculator से ज़्यादातर problem solve हो जाएंगे. But घर पे scientific है तो ले जा सकते हो. मॉडल चेक कर लेना, SAT की वेबसाइट पे बता देते हैं. So the data says top 5 states for new job growth per capita. L हटा दो, capital नहीं, per capita 2011 to 2013. Okay, what do you mean by capita? Capita का English meaning क्या होता है? Per capita सुनते हैं, per capita income. Capita क्या होता है? Capital punishment है, वो कौन सी punishment है? So दो ये हमारे मैथ से रिलेटेड नहीं है,
But any ideas, guys? Start. That is take the money which you invest dividends. Okay. So capital punishment का मतलब होता है life punishment जिसमें your head is taken off. Capita is a Greek word which means head. तो capita per capita मतलब per head. तो जब capital punishment किसी को मिलती है तो ये वो जेब वाला capital नहीं है, ये life वाला capital है. Life punishment मिल जाती है. Capital punishment means until death the capital punishment. ठीक है, ये तो ऐसी आपकी सामान्य जानकारी के लिए बताया मैंने. But let's solve this now. So you have, अगर आपको टेबल देखोगे, for the complex table है, there are 5 states: California, Colorado, North Dakota, Texas, Utah. First row gives you total jobs added in state, and then there's a number. Second row gives you new jobs per 10,000 residents. How many new jobs were added? ये 2 साल, 2011 to 2013. This is real SAP data question. अब आप इसमें आगे बढ़ते हैं. According to the information in the table above, what was the approximate population? Population पूछ लिया. जबकि बात jobs की हो रही है. Population of California from 2011 to 2030. Any answers? And you can announce your answers. बोलो. A, B, ईशान. चलो साथ में करेंगे. अभ्युदय. B और C में है. ठीक है. A, C. बोलो. C. Confusion है. Saradas, announce your answer. Sir, I went with C. C. And Nilanjan. Sir, A1. A. Sir, I would like to change one. To what? C. To C. ठीक है. So help us understand why C. Yes. चलो करो सॉल्व. बताओ कैसे करना है. So the new. तो अब हम ये देख रहे हैं कि आंसर, why is answer C and not A? Guys, we are talking about population. A क्या है मैं देख लेता हूँ. अच्छा, population किसमें C की दिया है? ठीक है. सारे ऑप्शन मिलियंस में है, तो मिलियंस में निकालना है. ठीक है. और ऊपर नंबर A है 3.8 मिलियन, C है 38.5 मिलियन. ओ, इसका मतलब है कि जिनका A आ रहा है या कुछ हो रहा है तो कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक होना चाहिए. अदरवाइज ये ठीक है. डेसिमल का प्लेसमेंट बोलो कैसे करना है. First of all, the new jobs per 10,000 residents was 235. So we come to California. California में इस पे आते हैं. For every 10,000 people in these 2 years, California is adding 235 jobs. So I calculated for one job was added for how many people. So it came out to around 42.5. And then I multiplied it by number of total jobs, which I got 38. Absolutely. So this is unitary method. What he's saying is, when we say that in these 2 years, I am adding job 235 over 10,000 people. तो मतलब अगर 10,000 लोग हैं, 235 jobs added. But total jobs added in the state was this 904500. और 10,000 लोग पे कितने jobs added थे? कितने total jobs add हुए हैं? Unitary method. So if this is job added for so many people, तो अगर total job इतना है, तो what is total job? Right, Kim? So cross multiply करो. 904500 into 10 to the power 4 10,004 upon 235. All options are in millions. 1 million में कितने जीरो होते हैं? How many zeros in a million? 1 Varshini? And in 10 million? That's right. है ना? 7. तो मैं ये चेक कर रहा था कि किसी का सुन के बोला है कि एक्चुअल में पता है. तो डिवाइडेड बाय 10 to the power 6. इसको डिवाइड कर दो. अब जो आएगा वो मिलियन. अभी ये क्या है? These are so many people. आंसर चाहिए मिलियंस में. मिलियन मतलब 10 lakhs. 10 lakh मतलब 10 to the power 6. डिवाइड करो 10 to the power 6. अब इसको सॉल्व करो. This gone. ये 6 zeros हैं. 4 जीरो यहाँ से चले गए. 2 जीरो यहाँ से चले गए. So basically your question is reduced to 9045 divided by 235. 38.5 भी आएगा. 2 डिजिट आएंगे उसके बाद आएगा डेसिमल. क्योंकि ये मान लो 10,000 है और ये मान लो 200 है. 50. So that should be 2
digits and then a decimal. Answer is option C. अगर option नहीं आ रहा है तो calculation mistake की आपने. बोलो सारा दास नीलांजन clear है? आगे बढ़ें? Yes. Let's do one last problem before we go to standard deviation. What's our question? It's not the method, but it's not the method at all, but can we do 38.5 to the power? Both terms. Yeah, 38.5. I'm not considering 38.5 into 35. And the approximate value is 9047.5, which is similar to 9,000. Oh, so what you're saying is you're working from options. Yeah. So you said that let's say option A is correct. You pick 3.8. What is the method I'm trying to No, do? I'm saying 38.5 is the answer. 38.5 into 35. I'm getting something 82,907.5. But that's Right. Go on and divide it by 10,000. Right. So your method is, Mohana, what you're telling me, your method is that this fraction, ये जो proportion है, for every 10,000, so much into total population should result in 904500. I take this, yeah, I can. That's what you're telling me. But who told you that answer is this? We'll have to do this for every option. And not every option, 3 options. You'll do this for A, you will see nahi aa raha hai. You'll do for B, nahi aa raha hai. Let's say you do for C and it says nahi aa raha hai. Answer. But C aa raha hai, then this is the answer. Yes. So you're saying I'll go by options, I'll see this proportion is reflected into which option, so that you get this. Yes, of course you will do this. क्यों नहीं? कर सकते हो. इस केस में 3 आइट्रेशन है. हो सकता है पहले आइट्रेशन में आ जाए, हो सकता है 3 में भी नहीं आए. Maximum 3 करना है. Yes, we can always do it. I was trying to find a question for you. I think question number 24 करते हैं, and then we go to standard deviation. This is a good problem. Let's solve question number 24. I give you full 1 minute to solve this. मेरा छोटा सा friendly advice is, no matter how tempting whatever option you read it looks like, read also and then decide. चारों पढ़ना, उसके बाद ही decide करना which is your answer. 24 please. Okay, sir. Done? Good. Yes, correct. You do. आप क्या करो, ये जो ऑप्शन आपने निकाला है इसको पढ़ो और फिर क्वेश्चन से टेस्ट करो. Is it really answering the question? Yes. Correct. According to the information given in the table above, which of the following conclusion बोलता है कि बिना doubt 100% हम बोल सकते हैं, can be drawn about per capita job growth in top 5 states. So there's nothing to calculate. The idea is to read each option and get your answer. अब क्योंकि मैंने आपको बोल दिया है चारों पढ़ना जरूरी है,
डोंट, अगर ऑप्शन बी बहुत अच्छा लग रहा है, यू आर रीडिंग ऑप्शन बी, स्टिल होल्ड, रीड सी, रीड, बेसिकली आई एम सेइंग चारों पढ़ो, एलिमिनेट करो एंड कम डाउन टू योर आंसर. Shall we discuss? Nilanjan, I seek your reply first. Bolo, which option, Nilanjan? Sir, A option. Option A. Sara Das. Sir, I went with option A. Sir. A. A, right? Yes, sir. 24A. Confused between A and B. A and D. A. डेटा को थोड़ा मिसरेड ये पहला नहीं था तुम्हारा ऑप्शन, पहला कुछ और था, वो पहला वाला बोलो. पहला वाला सर सी C. A. Kim. A. B and C. A. But you don't look happy. Answer right लाने के बाद भी. Yes. Okay, so guys, let's try and analyze this. Like I said, we will read all four. According to information given in the table above, which of the following conclusion can be drawn about per capita job growth? Per head कितना job growth हो रहा है in these top 5 states? So I will go bottoms up, नीचे से ऊपर जाते हैं, and we will try and see D, then C, then B, and अगर ये तीनों नहीं होंगे तो आंसर यही होगा, जो कि वैसे ही होने वाला है. चलो डी को देखते हैं. Job growth was lowest in Colorado because it had fewest number of jobs added per 10,000 residents. पहले आ जाओ Colorado. क्या इसमें fewest number of jobs added है per 10,000 residents? नहीं है. वो तो कैलिफोर्निया में है. तो कुछ देखने की जरूरत ही नहीं, आंसर भी हो नहीं सकता. Let's come down to C. Job growth was lowest in North Dakota because it had fewest number of total jobs added. Is it fewest number of total jobs added? Yes. So कौन सा पढ़ रहा है? So C may be. ये ना C अभी question mark है, मैं rule out नहीं कर सकता. I come down to B. So C looks probable. Come down to B. Job growth was greatest in Texas because it had greatest number of total jobs added. Greatest. Oh, sorry. टोटल नंबर का ग्रेटेस्ट तो नहीं है ये, दूसरे हैं उससे आगे, तो ये भी नहीं होगा. कौन सा नहीं होगा? सॉरी, बी. तो बी इज नॉट आंसर और डी आंसर. सी को हमने प्रोबेबिलिटी में रखा, ए पे आते हैं. जॉब ग्रोथ वाज ग्रेटेस्ट इन नॉर्थ डकोटा. ओके, व्हाई? बिकॉज इट हैड ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ जॉब्स एडेड पर 10,000. इज दैट ट्रू? यस. नाउ कम डाउन टू बी एंड ए एंड सी. राइट, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, व्हाट इज प्रॉब्लम विद सी? मैं रीड कर रहा हूँ. जॉब ग्रोथ वाज लोएस्ट इन नॉर्थ डकोटा बिकॉज इट हैड फ्यूएस्ट नंबर ऑफ टोटल जॉब्स एडेड. व्हाट इज द प्रॉब्लम? व्हाई नॉट सी? यस, अभिनव. your order qualification per capita, which means per head. But in C, they are seeing a total number of jobs in Dakota. However, they are asking the number of jobs which are actually given out. So, according to that, A should be done. सी, maybe you are right dear. मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, तो होल्ड करते हैं. बोलो. Sir, yeah, it doesn't cater what the question is asking. What is question? The question is asking per head how many jobs were added, but option C gives total number of jobs. Okay. Any other problem? देखिए, इसको समझने की कोशिश करते हैं. When I say per capita job growth, ये पूछ रहे हैं क्या? इसका क्या मतलब हो? अगर मैं इसको फॉर्मूले में बनाऊंगा तो ये कैसे बनेगा? डिनोमिनेटर में क्या आएगा? टोटल पॉपुलेशन आएगा डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में क्या आएगा? टोटल, करेक्ट, टोटल जॉब एडेड, क्या आएगा न्यूमरेटर में. ऑप्शन सी क्या बोलता है? ऑप्शन सी सेज जॉब ग्रोथ वाज लोएस्ट इन नॉर्थ डकोटा. रीजन इज बिकॉज इट हैड छोटा न्यूमरेटर.
The point is, we don't know about denominator. Look at the cities. अगर नॉर्थ डकोटा का पॉपुलेशन सबसे कम है, तो फिर ये छोटे न्यूमरेटर में भी this fraction will be greatest. This can be greatest. I don't know what is the total population. But if you look at option A says job growth was greatest in North Dakota because for every 10,000 people, it had the highest number. Growth, yes. Population कुछ भी होने दो. For every 10,000, this is adding maximum. तो इसका डिनोमिनेटर तो इसने क्या किया, सबको किस पे कंपेयर किया? 10,000 पे. ऑप्शन ए सबको 10,000 पे कंपेयर कर रहा है. ऑप्शन सी सबको टोटल पॉपुलेशन पे कंपेयर कर रहा है. टोटल पॉपुलेशन अभी हमको किसी का पता नहीं है. और जस्ट बिकॉज ये छोटा है तो उसका ग्रोथ छोटा होगा, ये डोंट नो. हो सकता है डिनोमिनेटर भी बहुत छोटा हो उसका. बहुत कम लोग रहते हैं नॉर्थ डकोटा में. एंड दिस वुड बी लार्ज वन. यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग रहते हैं तो ये एब्सोल्यूट नंबर बड़ा है, बट जब पर कैपिटा पे आओगे तो ये छोटा हो जाएगा क्योंकि उसका डिनोमिनेटर बहुत बड़ा होगा. तो आंसर ऑप्शन ए बेटर. सारा दास यस सर. आ गया समझ में? सर यही लिखा था. हाँ यही लिखा था बट समझ में आ गया. हाँ. अच्छा अगर राइट आ गया है तो आप लोग शर्ट कर लेते हो. ऐसा भी हो सकता है ना कोई और तरीका हो उसको करने का. चलो वी गो टू अदर कॉन्सेप्ट गाइस. हमको टाइम है कितना समय मेरे पास? 15 मिनट. ठीक है. So I will go to another concept. मैं concept पे पहले आता हूँ and then we solve some problems. And the concept is called standard deviation and range of data. ये statistics पे आता है. And then I come back to problems. So in SAT, I can tell you there should be exactly one problem from what we'll discuss now. Over the years, I have seen per attempt में एक और एक question जरूर आता है on standard deviation and range of it. ये दो कॉन्सेप्ट. तो स्टैटिस्टिक्स को समझने की कोशिश करते हैं. So let's say I've got some data with me. कुछ एग्जांपल लेके चलते हैं. Which university of US is your dream university? Sara Das, which is your dream university? MIT. Did you say MIT? Yes sir. MIT को लेके चलते हैं. So let's say I go for MIT undergrad engineering admissions last year. And I'm hypothetical data कुछ को कर रहे हैं. And I take this example and I try and convey both the points home. So I'm looking at MIT का data and I plot it on number line. And I'm looking at कि भाई वो जो admissions मिला, SAT का क्या score था MIT में admission का, वो undergrad admissions. And I saw कि there was a बच्चा at 1600 perfect score पे वहाँ पे admission मिल रहा है. और लोअर एंड पे 1480 पे एडमिशन हाइपोथेटिकली हो सकता है. प्रोफाइल बेस्ड हो, इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड, इंटरनेशनल स्विमर, राजीव गांधी खेल रत्न, एनपीएससी स्कॉलर, कुछ ऐसा भी होता है ना. तो वो सब. सो इफ यू लुक एट दिस, सो दिस इज द एसएटी स्कोर ऑफ एडमिट्स टू एमआईटी दैट ईयर अंडरग्रेड इंजीनियरिंग. If I have to understand what is the range of this data, so range of any data set in statistics, क्या होता है? Max minus min, है ना? So max minus min. The range of this data would be 120. Yes, correct. ये हो गया range. अब बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं. This is the range of this data. Range is max value minus min value. Let's come down to the next concept. So we pick Ishan, your dream university in US. हाँ, same dream है. अब you there? हाँ, मतलब ये नहीं कि कुछ अलग बता दें ताकि ये एग्जाम्पल आगे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे. Stanford. So let's say Stanford में एडमिट उस साल हुआ 1580 पे to 1460. Let's say this was the range of SAT score. Stanford 1580 to 1460, MIT 1600 to 1480. Range of MIT is data set का range क्या है? इस data set का range क्या है? 120. Both है
same range, same and both have same range. Let me also assume and allow me to assume both admitted 100 students that way. दोनों ने 100 students को admit किया. अब ये 100 students के स्कोर को मैं यहाँ पे प्लॉट करूँ. तो मैंने प्लॉटिंग चालू किया, बट उससे पहले मैंने सोचा कि लेट्स फाइंड आउट कि व्हाट इज द मीन स्कोर एट MIT एंड मीन स्कोर एट स्टैनफोर्ड. लेट मी से अगेन कुछ assumptions हैं. Let me say mean score was 1540 at MIT and 1520 at Stanford. Let's say ये mean निकाला. इसको ना मैं थोड़ा सा change किया. इसको 1550. Now I started plotting the scores of the 100 students. इसको plot करना मैंने चालू किया. 1 2 3 4 बच्चे यहाँ पे, कुछ बच्चे यहाँ पे, कुछ बच्चे यहाँ पे, कुछ यहाँ पे, बच्चे यहाँ पे, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, ये 100 डॉट्स बना रहा हूँ. निशान के 100 डॉट्स गिनना मत गिनना, मैं मजाक कर रहा हूँ. समझ गए? So let's say 100 डॉट्स मैंने बनाया और MIT में each dot represent a student का score, and let's say these are 100 dots. मैंने उसको plot किया, ऐसा दिख रहा है. स्टैनफोर्ड में मैंने plotting चालू किया, 100 students. And when I plotted these 100 students का score, ये 100 का dot plot, ऐसे dot plot नया word है भी, but ये 100 का plot number line पे ऐसा दिख रहा है. वो MIT नीचे Stanford. These are two data sets that I have which has same range. Max minus min दोनों का same है. दोनों का max और min का value अलग है और दोनों का क्या अलग है, mean अलग है. और क्या same है दोनों में? Sample size. Sample size same है, right? और range same है, बाकी mean अलग है. Starting lower or higher values. Now guys, the concept of standard deviation originates from here. When we say standard deviation, ये जो आप लोग SD या sigma ऐसा कुछ पढ़ते हैं ना, x minus x bar whole square वाला formula, जो कि SAP का scope नहीं है. SAP का scope is interpretation of standard deviation. So standard deviation basically means the key word is deviation. Deviation from what? Deviation from mean. Deviation from mean. Deviation of what? Of the data set. आपके given data set में mean के across कितना deviation. तो अगर मैं इसको पढ़ने की कोशिश करूं, I said standard deviation मतलब होता है deviation of given data set from the mean. Simple language में how varied is my data across mean. कितनी variability है, कितना spread है data set में across mean. Higher the spread, higher the standard deviation. More concentrated, compact data across the mean, lower standard deviation. तो standard deviation का मतलब होता है कि मेरे data set में जो central tendency है, mean, कई लोग median के साथ काम करते हैं, median, across mean या median, average के आसपास कितना spreaded data है. Higher the spread, higher standard deviation. Lower the spread, lower standard deviation. आगे जाके इसको margin of error और दूसरी चीजों से नहीं करेंगे. But if I give you this data and if I ask you whose standard deviation is higher, can you tell me? MIT. MIT or Stanford? Stanford. Don't know. 1 minute. Confused. MIT. Don't know. मेरा क्वेश्चन था whose standard deviation is higher. सारा दास, किसका standard deviation ज्यादा है? बोलो नीलांजन. Sir, MIT. MIT and Sara says Stanford. अगर मैं इसको कुछ बनाने की कोशिश करूंगा, ये कुछ ऐसा है. ये क्या है? ये MIT. ये क्या है? ये Stanford. ये mean है. If you look at this, there is more data at mean in MIT, which means it's more concentrated data out here. So SD of MIT
compared to SD of Stanford will be lower. ये ज्यादा वेरिएबिलिटी है इस डेटा में, ज्यादा स्प्रेड है इस डेटा का, कंपेयर टू MIT जो कि मीन के अक्रॉस ज्यादा डेटा है, यहाँ पे मीन के अलावा डेटा. Higher the spread, higher standard deviation. Lower the spread, lower standard deviation. Spread of data को डिनोट करता है या कनोट करता है स्टैंडर्ड डिविएशन. स्टैंडर्ड डिविएशन में ये बताता है कि मेरे डेटा सेट में मीन के अक्रॉस कितनी वेरिएबिलिटी है विद रिस्पेक्ट टू सम अदर डेटा सेट इफ आई एम कंपेयरिंग. ये याद रहेगा आपको. यस. अभी कैसे डी का प्रॉब्लम करते हैं. So, बुक में आ जाओ and I want you to solve question number 19. 19. हाँ 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 कोई टेम्परेचर वाला क्वेश्चन है वो करना है. SAT will never ask you to calculate standard deviation, but it will always have a question on interpretation of standard deviation. करो. 19. क्या हुआ? Same exercise. Same exercise. ये आगे नहीं कहीं. तो टिपिकल लड़कों को मैं रोक सकता हूँ. अभी बच्चे को 19 तो. Same exercise 8.1. There is an answer here. Okay, Nilanjan noted. दोनों में 21 डेज को रिकॉर्ड किया गया है. 100 स्टूडेंट्स. सिटी ए टेम्परेचर एंड फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी मींस अकरेंस. कितनी बार आया वो टेम्परेचर 21 डेज. एंड सिटी बी का डेटा है. Then you are if you read options, you realize this is a pure standard deviation of question which we did just now. MIT versus Stanford. Okay. Okay, let's see. So, Sarah done. चलो नीलांजन का आंसर मुझे मिल गया ए. सारा नहीं आंसर. So C. B. बॉम्बे. B. तो पीछे क्या दिया हुआ है? पीछे सब गलत आंसर हैं. B. बॉम्बे. So correct answer is B. अब सी और ए को रूल आउट करते हैं. पहले पढ़ने की कोशिश करते हैं. So Kshitij Mittal, read the question loudly. Which of the following is true about the data struck for these 21 days? So which statement is true is what they are asking. सारादास अब ध्यान से देखना. डेटा क्लियर हो गया. 21 days है दोनों में, सिटी ए में सिटी बी में. And there are some temperatures which is occurring like 80 degree in city A happened twice, 79 happened 14 times and so on. आगे बढ़ते हैं. Option A. Standard deviation of temperature in city A is larger. If you look closer, आपका MIT ना city A है, क्योंकि उसका 79 सबसे ज्यादा बार हो रहा है. मीन कुछ 79, 78 के आसपास आने वाला है. 79, 78 के बीच में, और मैक्सिमम वैल्यू 79 के आसपास. क्योंकि 79 से नीचे 3 वैल्यूज हैं, 79 के ऊपर 4 वैल्यूज है, और 79 के 14 वैल्यूज है. जब आप एवरेज निकालोगे सारा, it will be something between 79 and 78, more closer to 79 than to 78, because there are 3 values putting it down, then pulling it up, then 79. 3 values 79 को ऊपर ले जाने की कोशिश करें. क्योंकि there are 4 values which is pulling it down, then 79. Of course 4 is more big. तो 79 पे थोड़ा सा नीचे आएगा एवरेज. More values around 79. Look at city B. 63246. अगर आप देखोगे एवरेज आएगा 78 के आसपास, क्योंकि 9 वैल्यू 78 से ऊपर है, 10 वैल्यू 78 से नीचे. वो ऊपर नीचे पुल करके 78 के आसपास एवरेज आएगा. करके देख लेना. पर कहने की जरूरत नहीं है, स्प्रेड से समझ में आ रहा है. But they are spread. So this is city B, Stanford. जब आप उसको प्लॉट करोगे 21 वैल्यूज को, and MIT is city A. इसका स्टैंडर्ड डिविएशन ज्यादा है. ऑप्शन बी. The standard deviation of temperature in city B is large. Let's look at C. Standard deviation of temperature in city A is same as that of city B. No way. No way. Range may be same. Is range same? Yes.
रेंज से मैं स्टैंडर्ड डिविएशन से बट इट हेल्प्स और ए को गलत है कि तो उल्टा दिया आगे बढ़ सकते हैं I want you to solve question number 36 एक बड़ा जंप दे रहे हैं 36 I think this is Khan Academy a sample paper of SAT I don't remember exactly but SAT type 36 1 minute please solve Yes. Correct. What happened? Yes. I don't know. Let's see. You stay with it. See. Okay, so we go for that round. Nilanjan and Sarah, unmute and tell me your answers. Sir, D. E. Sir, D. E. D. 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 Now the D. Mobile में time देख calculator. Verify करो. क्या आया verify करके D. C. D. D. C. C. Okay. मुझे लगा था ये शायद सबका right होगा. So till the time everybody gets it right, we will go on and solve करते रहेंगे. You will skip your lunch. Answer is अब देखते हैं. Why not C and why D? Let's see. C. So what does it say? There are 22 students. We calculate for R1 is equal to R1 is equal to R2. Okay. So 88 minus 56 is equal to 112 minus 80. 112 minus 80 is 32. और वहाँ पर भी 32. So range दोनों का equal है. अगर range दोनों का equal है तो possible answer है A, D. क्यों? It's not equal to S2. Because S1 is not equal to S2. देखने से ही लग रहा है standard deviation of second वाला will be higher than मतलब after exercise is higher than before exercise. But ऐसा कोई option नहीं है जहाँ पे R1 is equal to R2 हो and S2 greater than S1. So it will be तो not दोनों equal होने की इसमें आंसर नहीं है. C क्यों नहीं है? Because समझ में आया? C बोलना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि दोनों concept गड़बड़ हो गए. Range और standard deviation. S1 is not greater than S2. है ना? S2 is greater than because S2 is Stanford and S1 is MIT. ठीक है? Answer is option B. ये आता है ऐसे. या आपने पकड़ लिया तो एक क्वेश्चन पक्का based on standard deviation you will be able to find. क्या है? हाँ तो 5 मिनट है. मैंने 5 मिनट तो ब्रेक दिया है. अभी है 5 मिनट. ठीक है. So कुछ और questions रखें. Guys, 5 more minutes. Let's utilize them and questions. पैराबोला पढ़ा है? आप लोगों ने पैराबोला पढ़ लिया? मतलब आप लोगों ने पढ़ लिया? Great. SAT challenge question 2, 30 seconds. चलो 45 seconds. SAT challenge question 2. First go में बिना मेरे prompt की अगर आप इसको right ला रहे हो तो give yourself 1 point. Otherwise we'll discuss the answer. What does the vertex tells us about US gas price? So what the direction is there? Okay. Huh? The best line, best way. The scatterplot drawn at left depicts price of 1 gallon of gasoline in the United States, Y dollars from 1980 to 2008. Effects represent number of years since 1980. Graph of
quadratic model that fits this data has a vertex at 17.24, 1.33. Khan Academy level 4 question है. What does vertex of this graph tells us? तो 4 options हैं, आपको उसमें से एक pick करो. Yeah. Let me know when done. Just raise your hand. No. Okay, sir. So don't discuss it, but we do. Also, read this and match this with this. So now क्या word is option. There is one particular word which kills it. When you are Yeah, I don't see. फिर ये होगा केवल भी नहीं होगा. ठीक है, होल्ड करो. चलो इसको डिस्कस करते हैं. निरंजन बोलो. Sir, C option. C. And Sarah, I know your answer. D. C. C. D. 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 C. C. चलो चलो मैडम. D. D. So not sure and जिसका भी D नहीं आया, give yourself 0. और जिनका D आया, you give yourself 1 point. ये second challenge problem है. First वाला भी आपने ऐसे स्कोर निकाल लेना. ये हमने पहले भी प्रॉब्लम किया था ना तुलसा. वो प्लेयर मिनट्स गेम वाला उसमें भी शायद किसी एक या दो का ही राइट था. गिव योरसेल्फ 1 पॉइंट. मैं भी स्कोर दूंगा. वहां पे जो पहली बार मैं आंसर निकाला वो. लेट्स लुक एट ऑप्शन सी एंड डी में ही सारा डिबेट है. निरंजन ध्यान से देखो. राधा निरंजन, व्हाई डोंट यू रीड ऑप्शन सी? पढ़ो उसको अनम्यूट करके. रीड इट लाउडली. In approximately the year 1997, the price for 1 gallon of gasoline reached its approximate maximum value of dollar If you look at this, 1.33. ये जो पैराबोला है, this parabola is opening up. तो जो पैराबोला ओपनिंग अप होता है उसमें कोई मैक्सिमा नहीं होता है. अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो, आपने डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ा है, तो उसमें कोई मैक्सिमम नहीं होता. पैराबोला ओपनिंग अप है द मिनिमम. इसका ये मिनिमम पॉइंट है. ये दोनों ऊपर जा रहे हैं. देयर इज नथिंग कॉल्ड एज मैक्सिमम, है ना. ये ध्यान रखना. अगर ये ऐसे जा रहा है तो इसका कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, बढ़ता जाएगा वाई पे, मगर उसका एक मिनिमम वैल्यू होगा बिकॉज़ इट्स ओपनिंग. अगर ये ओपनिंग डाउन होता तो उसका मैक्सिमम होगा. दैट मैक्सिमम किल्स इट. So you have to read your options carefully. Okay, ठीक है. So ये दो questions हमने किए, दो challenge question. How many of you got both right? If option B was not given. हाँ, let's discuss this. एक मेरिट पर क्या मारा? बोलो. There is only option A, B, and C. A, B, and C. Okay, we are discussing same problem. There is another modification to this. Imagine there is only A, B, and C. No option B. So the question is, what do we choose? My answer. No, it will not be B. So let's read B. Let's read B. In the year 1997, price of 1 gallon of gasoline reached its exact minimum value of $1.33. Okay, so what is not good with this option? What is not good? Because line of best rate is an estimated, approximated, projected value. And this exact thing, you cannot say with surety.
1997, so 1980, 85, 90, 90, 90, 90, 95, 96, 97. Now, if I go to 97, to say what is that value exactly will be very difficult because vertex tells us ये इसका vertex क्या होगा. So this exact thing, hence D is not here. Okay, and let's say if you say D नहीं था, and then can I choose? Then I think again same answer. That is not a sad problem. They said it very intelligently and they don't do such errors. If they ever do, you get a grace. You get a grace. Grace in the sense they won't count it in your right or wrong. So, thank you. Thank you so much. Nick, who got both right? Challenge problem 1 and challenge problem 2. Sara Nilanjan mein koi nahi hai. So, thank you guys. So next time when you meet, I think Professor Uday will do chapter 12 with you. आपको वो तैयार कर देना थोड़ा पढ़ के आना. Yes, sir. I won't be able to attend that. Next week I will. Recording. And chapter 9 मेरे हिस्से आया हुआ, so we do chapter 9. I don't know, maybe 1-on-1 if I'm here, 1-on-1, या फिर हम लोग उसको physically करेंगे या online. So thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Please register yourself for December 10th as soon as possible. उसको delay मत करो. You will not get your choice वाला center. Register करो. And take Shruti madam's help. Mr. Shruti Rana Day's number is there in that group. उनकी help लीजिए. वो आपको help करेंगे register करने. Is there any benefit of the essay? Pushpalata, thank you. बंद कर दो recording. Benefit for essay? Yeah. Essay. ऐसे सेक्शन बहुत पहले काफी टाइम हो गया.